Okay, so I guess all of you guys have saw the video. So let us start by introducing ourselves. Okay, Hari sir, can you introduce yourself, please? Yes, hi, my name is Hari Kuti and I am currently from Mumbai. I am working with NCI and currently I am also working for my own startup, setting up my startup which is into analytical and laboratory equipments. Thank you. Oh, thank you. Uh, Pal, please introduce yourself. My name is Pal Agarwal. I'm from Kolkata. I'm 18 years old and I'm studying. I'm in class 12. I am interested in economics, finance, and computer science later, so I'll be taking something related to that further. So this was something I was interested to take part in, and it's looking forward to take it further. Oh, thank you so much. Now we move on to Deeptanshu. Deeptanshu, can you please introduce yourself? Hel- Hello everyone. So this is Jiftangshu Samanta, the Chief Marketing Officer of Learning While Traveling. Thank you. Okay, now we move on to Aman. Aman, please introduce yourself. Oh, okay. Namaste. Good evening to all of you. Myself, Aman Rajwasho, and I'm currently completed my graduation from University of Allahabad, and I am from Chhapra, Bihar. Thank you. Thank you so much. Anjali, can you please introduce yourself? Yes, sir. Good evening, everyone. My name is Anjali Singh, and I study in class 8. I am from Lucknow. Okay, so let me introduce myself. My name is Saurashtra Mukherjee. I am from Kolkata, and right now I am pursuing a course on BBA in entrepreneurship from ILIT College. Thank you. Okay, so now you guys saw the video. So let me ask you some questions regarding that video. So in the video, you guys saw that the two founders of Bearcoop.com, they were interested in entrepreneurship from their college life. So nowadays, as you can see, a lot of teenagers become interested in entrepreneurship, or they want to start their own business and don't want to do their job, don't want to get into any job. So why do you think this trend is increasing right now these days? Hari sir, can you please explain? Yeah, am I audible? Yeah, you're audible. So I think the trend is increasing because the like people are more aware of that a job or getting a job is not the ultimate goal, or your what we say that working hours of 10 to 6 or 9 to 6 working hours will not give you any what we say that any career growth, or not you are not your own boss, in short. So people want to become the owners. They want to student the young generation, they want to become the like become boss of their own. So that is the thing, they are all jumping into startups. And more or less no one wants to work lifelong, right? Everyone wants to work for a short time and enjoy the remaining period of their life peacefully with the money that they earn in business. So I think that is the main reason that most of these guys are and even the government policies that are these days are very supportive and very much they support startups. So even that is one of the reason that most of them are going for a startup rather than going for a job. Okay, thank you. So, Paul Agarwal, did I spell it correct? Are you referring to Hello. me? Yeah, yeah. Okay. Actually, you had some I didn't get Paul it. Yes, Agarwal, yes. right? Yes. Perfect. So, Paul, please tell me what is the why do people want to be their own boss? I mean, what is the pleasure behind it?
behind being your own boss? Okay, so I feel it's because when you're on your own boss, then you can work according to your own terms. You can set up your own deadlines. You can set up your own working style and your work culture. You can set it on your own terms, your own principles and ideals. So this is how you, and if you do things this way, you actually get closer to what you define success as. And this is the reason why Indians especially are moving towards startup, because the youth especially is getting, like Sir Hari sir has rightly mentioned, that they are getting more aware and they want to they are well equipped, they are more aware and want to be their own boss, of course. But it's mostly because the youth, they are getting more inspired by the Western culture mostly, and as well as now that we are seeing a growth in the great startups that have already come in, so that inspires the youth to take it forward and bring in the culture more. So yeah, that's my take. Okay. So now we move on to Aman. Aman, can you please tell us why the government is launching several policies for startups, not for jobs? Why the Indian government is encouraging people to build their own startup? Good question, Aritra. I think ये ऐसा चीज है, आई थिंक जो सरकारें या फिर गवर्नमेंट है वो भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है. फर्स्ट चीज को अगर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देखा जाए तो जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, लाइक चाइना के बाद इंडिया इज द सेकंड कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट. सो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ देयर इज आल्सो वन मोर थिंग इससे कनेक्टेड है कि हाउ टू गिव मोर एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द यंगस्टर्स. इंडिया को अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है कंपेरेबल टू अदर कंट्रीज. जो हमें प्राइम मिनिस्टर वो भी इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे जो है अगर जब पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है बट जॉब की हमें डायमेंशन वो कम होते जा रहा है, या फिर जो जितना था उतना ही रहेगा, राइट. उतनी सारी जॉब अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी. और उसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकल एस्पेक्ट जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, हर एक चीज में कंप्यूटर का यूज आया या फिर हर एक जगह जिस तरह से डिजिटल वे में हम लोग जा रहे हैं, तो ह्यूमन पॉपुलेशन या ह्यूमन लेबर जिसे कहा जा सकता है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, राइट. तो और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज नॉट द मेन एम, उसका वो नहीं है कि वो ज्यादा जॉब प्रोड्यूस करे, ठीक है, राइट. जैसे अभी हाल के एग्जांपल में देखने को मिला कि अगर गवर्नमेंट अगर कुछ कंपनीज को या जैसे एयर इंडिया या फिर IRCTC, इंडियन रेलवेज काफी सारी चीजें चलाती है, तो वो उतना प्रॉफिटेबिलिटी उसका मेंटेन नहीं रख सकती, बिकॉज गवर्नमेंट का मेन प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, राइट. तो वो चाहती है कि अगर हम एक कोई फील्ड में जॉब दे सकते हैं, इससे अच्छा है कि लोगों को ये चांस दिया जाए. लोग अगर इस मतलब एक बंदा जॉब देगा तो आई थिंक वो बहुत ज्यादातर लोगों को जॉब दे सकता है. एग्जांपल ओयो के जो फाउंडर थे रितेश अग्रवाल, राइट, या फिर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ओला के भवेश अग्रवाल, उन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, जितना आई थिंक अगर एक गवर्नमेंट अपना कोई चीज स्टार्ट करती तो उतना नहीं, ह्यूज अमाउंट नहीं दे सकती थी, राइट. सो आई थिंक दैट फोकस ऑन द मोर ऑन द एम्प्लॉयमेंट रेट to give not by the government, not to the governments, it by the people. So I think government is more focused on. You're done, Aman? Yeah, I am done. Okay, so Hari sir, can you please tell us? You see, the government is trying to support the startup culture, but why is the Indian society still dependent or still believe in the tradition of doing a job, especially our parents? Why do you think they're still telling us to get a job first? You have to work as a slave. Why they don't support us to become our own owner? What's your take about it, Hari sir? So I think the reason behind this is the generation gap, or whatever the parents are thinking of the generation that they were born in. So they think like getting a job and
earning a fixed income is always much better than being your own boss. They don't believe, in short, they don't believe their children can do something of their own, and they can earn money, they can earn good income. So they don't really have that confidence. So that is one of the reason. And they are not aware of all these government policies and efforts being taken by various incubation centers, or maybe the ministries. So they are not aware of all that things. So they think the first priority should be getting a job, because they don't know whether what skills their child has, or their son or daughter possesses. Even they are not aware of that things. So they think, let them do a job first, get some experience, and later on they can think of doing some business. So even that is true, because many startups still fail in India, though there are lots of start operating after within a timeline of 2 to 3 years or 5 years down the line. They should be able to start operating. So two type of reasons are there. So the startup is always considered as a risky thing to be going on. And if you consider of a middle class family where the father, where only one person is earning, and they don't it doesn't works out, the plan doesn't works out, within a year or two the startup gets closed. So it's a very big loss for them, and it's risky. So the parents, so parents also think like, no, no, let him do a job first, let him understand the market, and later on they can start their own business. So that is also one of the reason, I believe. Okay. So, Paul, what's your take on this? Why do our society does not support entrepreneurship and focuses more on job? Yes, like Hari sir said, mostly whatever I was going through, yes, it's the job security that comes with it because you have a fixed income. So it's mostly that, because when you're working, you know that at the end of the month you'll get a fixed amount of money, and accordingly you can do your future plans. You can plan your investment. You can plan where you're gonna, how much you're gonna save, how much you're gonna uh, keep for your family, and purchase something big. So it's a very plan, and things go according to what you plan to do, and things become a little easy when you're doing a job, because it's everything is put into small boxes, everything is put into the place. So in India, it's it's that mentality that people uh, want to be settled. They want to have a proper, simple, settled life, and that is why they prefer going for a job, because life becomes a little easy. Because uh, usually all in India, it's mostly family based. So you are not only sole responsible, but you're responsible for your entire family. You are earning for your family. So it's mostly that. So that is why people are indulged in jobs rather than entrepreneurship. Oh, Yeah. okay, so Han, please tell us, why do more than 90% of the startups fail in India? What is the reason behind that? Hello, Aman. Can you hear us? Hello.
Okay, I guess Aman Yeah, could not yeah. hear us. Okay, please tell us why do more than 90% of startups fail in India? Why 90% startups fail in India? That's your question. Yeah, yeah. Yeah, okay, fine. What is the Uh, reason? I Yeah, 90%, I think not in India. I think this is the overall rate. मुझे लगता है ये overall rate का ही नहीं, जितने इंडिया में में अगर है आप, ना? हाँ इंडिया में भी है, बट आफ्टर ऑल आई थिंक ये ओवरऑल पूरा शूटअप है, लाइक कहीं का भी स्टार्टअप होता है, ऐसा कहा भी जाता है कि ओनली 90% स्टार्टअप फेल्स इफ यू गो थ्रू द रिच डैड पुअर डैड बुक बाय Robert T. Kiyosaki or Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Many book aspects that why the more than 90% startups fail. This is the main cause. Because कहीं इसके फर्स्ट रीजन एक ये है कि आज का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक देखा देखी स्टार्टअप कभी कल स्टार्ट करते हैं, लाइक जैसे कि मेरा दोस्त है, अगर मतलब उसका इंटरेस्ट शुरू से जॉब दे, फिर उसको पता नहीं कि क्या पैशन उसका है, बट मैंने स्टार्ट किया कोई स्टार्टअप, बट वो चाहता है कि उसी पे सेम चीज वो भी स्टार्टअप कर सकता है, राइट, क्योंकि उसने भी सेम लगता है ना कि सेम हमारे साथ ये पढ़ा है बंदा, सेम हमारे से क्वालिटीज है, सो इफ ही कैन डू इट व्हाई आई कैन नॉट, राइट। और उसके बाद वो ऐसी चीजों पे वर्क नहीं करता, उसका एफर्ट नहीं होता उतना, तो आई थिंक एक वो मेन रीजन होता है फेल होने का। सेकेंड थिंग ये आती है कि मोस्ट ऑफ स्टार्टअप जो सक्सेस होते हैं ना, वहां पे वो एक मेजर चीज होता है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नॉट ऑन द स्टार्टअप इज रियली दैट कि कुछ भी आप कर दिया, आप कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी मतलब सर्विस दे रहे हो और आपका स्टार्टअप सक्सेस हो जाएगा। तो इट्स रियली मोर फोकस ऑन दैट, ऑन व्हाट प्रॉब्लम यू आर लुकिंग फॉर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपने देखा होगा जब ओला स्टार्ट हुई, उसके साथ बहुत सारी कंपनीज भी स्टार्ट हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, बट हम लोग उबर और ओला केवल अभी दो ही मार्केट में बची है, बट उसके साथ में जो भी चीजें थी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ओके आ रही है, फाइन। सो तो वही चीज है कि उबर ओला के साथ बहुत से स्टार्टअप स्टार्ट हुई, बट वो आज फिल हम लोग उसका नाम भी नहीं जानते हैं, राइट। जुगनू फिर पता नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल थे, तो ये एक मेन रीजन हो सकता है, ठीक है। और थर्ड, अगर आपने बेसिक इंडिया पे क्वेश्चन पूछा है, तो इंडिया का आई थिंक उतना भी इकोसिस्टम नहीं है कि आपको बहुत फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट उसके रूल्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर में मैं बताना चाहूंगा, तमिलनाडु में, ठीक है, आपने रैपिडो बाइक का नाम सुना होगा, राइट। रैपिडो का वहां पे जब चेन्नई में स्टार्ट हुआ वो स्टार्टअप, तो उसके बाद तुरंत ही वहां की पॉलिसी आ गई तमिलनाडु गवर्नमेंट की कि बाइक जो है, बाइक को हम लोग इस तरह से यूज नहीं कर सकते कि आप किसी बंदे को बैठा के या फिर उसे चार्ज कर रहे हो, या फिर ट्रैफिक में आप ट्रैफिक के एक्स्ट्रा प्राइस उसे चार्ज कर रहे हो, तो वहाँ का रूल्स अलाउ नहीं करता। और वहाँ की गवर्नमेंट के आपने वो भी देखा होगा कि उसकी कोई भी बोनेंजा या फिर कोई भी कैशबैक जहाँ मिलता है फोन पे या फिर कोई कैशबैक में, वहाँ की गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडिया का जो रैंक है वो भी आई थिंक 84 आई थिंक है, शायद अभी 82 84 के करीब है, राइट। तो आई थिंक इतना मतलब उस टाइप का भी यहाँ पे इकोसिस्टम भी नहीं है कि जो भी स्टार्टअप को बूस्ट कर सके और उसको हर सारी प्रायोरिटीज दे सके। So I think these are the three main regions that I'm looking. Okay. So, as you saw this video, the case study is about Bewakoof.com. So, Pal, can you tell me what's so unique about this name, Bewakoof? What makes this name so attractive and impressive? It's the word that they use. It's very goofy, and people keep using that, and it's very unique to keep it as a company's name, and that's why people will tend to remember it. And it's very loosely used by everybody, so it's a good name for a company, I think. But yeah. So, Hari sir, what's your take on this? Why the name Bewakoof is so unique for this startup? Bewakoof is a slang. I'll say it's a word that most of the students of college life
college life students will be using it to just to call their friends or their classmates, like "Arey, tu to bewkoof hai," like that type of thing. So that might be one of the reason because of which the website is so much popular, or the brand has become so much popular. So that is one of the reason, I believe. And yeah, means because of that, you won't forget that name. Once you just go to the website, you will just always, like, there are it's very less chances that you forget the website name or anything. So that is one of the reason, I feel. Okay, so Aman, what's your take on this? Why the name Bewakoof is so impressive? Bewakoof. Yeah, I somewhat agree with the both of the points that Pearl and Hari sir said that. And one more thing I have to add that, तो हम एक बार देखिए किस तरह से कंपनीज को देखा जाता है. एग्जांपल एप्पल देखे तो एक सेब था, उसको उस पे नाम रखा गया, या फिर अमेजोन, मतलब एक नदी जो पॉपुलर था. तो आई थिंक कंपनीज इसको फॉलो करती हैं कि आपको एक नया नेम याद करना हो, ठीक है. इससे ज्यादा बेटर है कि कुछ हम लोग पॉपुलर चीजों के बारे में सर्च कर सके या फिर देख सके. तो उससे दो चीजें फायदे लगती हैं. लाइक एक ये होगा कि मान लीजिए अगर आप लोग एग्जाम्पल अभी एप्पल सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे तो एप्पल सेव लास्ट बाद में आएगा शायद. एप्पल के कंपनी का जो लोग जो डिटेल्स वो पहले आ जाएगा, राइट. तो आई थिंक मार्केटिंग के तौर पे काफी सही यूज हो सकता है इसके चलते. और सेकंड, हरी सर ने काफी अभी सही एग्जांपल भी दिया कि नेम जो है हम लोग ऐसी चीज याद करें कि मतलब लोगों के मन में दिमाग में हमेशा वो बना रहे. एग्जाम्पल ओला का कुछ मतलब है, मतलब ओला क्या है, मतलब अजीब टाइप का है. मतलब फ्रेंड्स में ये भी कहा जाता है ओला क्या है, मतलब राइट. बट उस पे नाम रख दिया गया. तो बहुत ही इजी कैची नेम होना चाहिए, या फिर आजकल जिस तरह से इसलिए कंपनी जो जाती है कि बहुत इजी और कैची नेम रखा जाए एज कम्पेयर टू अदर कोई भी इंग्लिश वर्ड. Ola is I think it's a hello in Spanish. So Spanish language ka, so they have copied that, and because of that, Ola is also like very famous. या वो होता है ना शायद जो आई थिंक आसमान से गिरता, लाइक यूपी बिहार का मैं अगर लैंग्वेज बताऊं तो ओला बेसिकली वो कहा जाता है जो मतलब बारिश के दिनों में जो पत्थर टाइप का गिरता नहीं है, मतलब जो जम जाता है पानी, राइट, उसको ओला कहा जाता है. तो वहां पे लोगों को पता नहीं था जब तक ओला नहीं आया था कि ओला कोई कंपनी भी है. तो लोग ओला उसको समझते थे, बट जब आया तो पता चला कि अच्छा कंपनी भी होती है ओला. दैट्स रियली मतलब डिफरेंट थिंग. तो ये काफी अच्छी लर्निंग थी कि अगर आपको कंपनी नेम कोई देना है तो हम लोग कोई ऐसी कंपनी चूज करने के बजाय कोई इंग्लिश टफ वर्ड दे दिया फिर ऐसा दे दिया, उसके बजाय हम लोग सिंपल नेम जो आमतौर में यूज होती है, ठीक है, तो उससे मार्केटिंग बहुत इजीली हो जाएगा एज कंपेरेबल टू अदर थिंग्स. तो आई थिंक इसलिए हमें इजी नेम नहीं चूज करना चाहिए. तो एक बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ से मिलती है. Okay, so we are running low on time. So that's it for today. Thank you, everyone. Thank you for attending the session and have a very good night. Thank you. Thank you all and good night. Thank you so much, Aritra. Thank you, Yeah, everyone. thank you. Good night. Good night, everyone.